Here this is implication. Implication को हम conditional statement भी कहते हैं. Implication is also called conditional statement. This implication means if P then Q statement. In other words, if P then Q proposition. For this implication we use the symbol this one or this one. We read P implies Q. We read this one as P implies Q. The first one is hypothesis or condition. The second one is conclusion or result. The first one is condition. The second one is result. If the condition happens, meaning if the first one happens, then the result, the second one must happen. Here we have proposition P, proposition Q. And for these two propositions, this is the implication or conditional statement. We read P implies Q. We also read if P then Q. If value of P is true and value of Q is false, then value of this conditional statement will be false. Other cases will have true value. अगर condition P की ट्रू वैल्यू ट्रू हो और रिजल्ट की ट्रू वैल्यू फॉल्स हो, तो फिर इन दोनों का जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है या implication, उसकी वैल्यू फॉल्स होगी. The value of this conditional statement will be false if the truth value of P, that is if the condition holds and the result fails. अगर P की वैल्यू ट्रू हो, Q की वैल्यू फॉल्स हो, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होगी, बाकी वैल्यू ट्रू होगी. Where P and Q are the premise and conclusion respectively. The first one is called premise. It is also called hypothesis or condition. The second one is called conclusion. We also call result. It can only be false. यानी इसकी वैल्यू false होगी. It can only be false when the premise, which is also called antecedent, is true. If value of this P is true, but the conclusion, that is consequent, if value of Q is false. हमने सिर्फ इसी लाइन को याद रखना है, यहाँ पे F लिखना है, बाकी हमने true value लिखना है. अगर यहाँ पे T हो, अगर फर्स्ट प्रोपोजिशन ट्रू हो, सेकंड false हो, तो यहाँ पे false होगी, बाकी ट्रू होंगी. If you work hard, ये हमारे पास P है, then you will be succeeded. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होंगे. If one angle of a triangle is 90, then other two angle will be acute angle. किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं. हर ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं. अगर हम देख ले, या हम इस तरह भी बना सकते हैं. किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 हो, तो बाकी एंगल ये वाला और ये वाला क्या है, ये एक्यूट होंगे. इसी तरह अगर यहाँ पे 90 एंगल हो, तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे. एक्यूट वो एंगल होते हैं जो 90 से कम हो. If one angle of a triangle is 90, then the other two angle will be acute. Acute का मतलब है less than 90 degree. Thank you.